Hello friends, welcome to the channel once again. Today we are here on exercise 1.1 and we are solving question number 1, that is to express each number as a product of its prime factors. And we are done with 140, 156, 3825. And the next one which we have today is 5005, of which we will be finding out the prime factors. So let's get started without wasting our time. The number is 5005. So 5005 is divisible by 5. ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पे हमारे पास में 5 है, तो 5 के टेबल में 1001 टाइम्स में हमें मिलेगा 5005. नाउ नेक्स्ट 1001 इज डिविजिबल बाय विच नंबर? लेट्स चेक इट आउट. सो 1001 को हम 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है. तो फाइनली हमें पता चल गया कि 1001 जो है 7 से डिविजिबल है और ये 7 के टेबल में 143 टाइम्स में आता है. नेक्स्ट 143 अब किस नंबर से डिविजिबल है? 143 जो है ये 11 से डिविजिबल है. 11 के टेबल में 13 टाइम्स में हमें मिलता है 143 एंड लास्ट 13 1 जा 13 which is already a prime number. So we have got our answer of expressing 5005 as a product of prime factors. So we can write it as 5005 equals to 5 multiplied by 7 multiplied by 11 multiplied by 13. So yes, this is the answer what we have got today. That's all for today in this video. Thank you so much for watching. Please do subscribe to the channel and follow for more. Thank you.